Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. Recently, I was talking to one of the students who said, Sir, I'm starting preparing for the CLAT, but I believe I have less time. When I have less time, I have to cover so much of current affair. I have to cover so much of legal part. I'm starting for the first time. So will I be able to manage and crack this CLAT examination? Then he can say, I suggested some plan and I gave him some guidance. Okay. Still, he was doubtful, continuously asking me so many questions every now and then. Okay. And thereby, I realize that many of us must be facing similar kind of problem. Yes or no? आप में से बहुत सारे लोग जो अभी you can say तैयारी करना चालू करे हैं या पॉसिबली आप ऐसी सिचुएशन पे हैं कि आपने तैयारी कर ली है बट आपको अब लग रहा है कि आपके पास समय कम है, ठीक है, एंड देन यू हैव लॉट ऑफ डाउट्स आर गेटिंग क्रिएटेड, ठीक है, डाउट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट but you doubt your ability, you doubt the available time, you doubt everything around you. So that's the reason why this module. Okay, my dear students, first and foremost thing we have to understand that कि हमें अगर कहीं हमें पता है कि हमें ये गोल अचीव करना है, ठीक है, और हमें ये पता है कि अगर मैं ये गोल अचीव करने के लिए पीछे भागूंगा पॉसिबली, ठीक है, मैं ये सोचना चालू करूंगा आई हैव full capability. Yes or no? This is a perfect time wherein I can put all my 100% time. Yes or no? And I can flourish. I can become in top 1% of the country. So my dear students, so when we talk about preparation for the CLAT, I'm sure हम सब लोगों का ये गोल है, हम सब लोगों का ये कॉमन गोल है दैट, ठीक है, हम डेली अपना टारगेट बनाएं और हम उस टारगेट को डेली अचीव करें. ये बहुत क्रूशियल टारगेट है दोस्तों, ठीक है, ये क्रूशियल पॉइंट है क्योंकि हम इसकी वजह से डेली हमारे गोल को अच्छी तरीके से अचीव कर पाएंगे. सिमिलरली वी वांट टू एंजॉय, वी वांट टू फील कंफर्टेबल एंड वी कैन से फील हैप्पी अबाउट ऑल डेली आवर लाइफ एंड एफर्ट्स. यस और नो? अगर मैं क्लैट की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, मैं मैथ्स कर रहा हूं, मैं लीगल कर रहा हूं, मैं करंट अफेयर कर रहा हूं, मैं लॉजिक कर रहा हूं, मैं आरसी कर रहा हूं, मैं दुखी होकर परेशान होकर नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं हैप्पीनेस के साथ करना चाहता हूं एंड एट द सेम टाइम ऑब्वियसली वी वांट टू अचीव हाई स्कोर, वी वांट टू गेट हाई रैंक सो दैट वी कैन स्टडी इन द टॉप एनएलयूज. यस और नो? सो आई एम श्योर you understand these are our common goals. For this common goals, it is very important for us that we can say one have to have different approaches. One important part to achieve these three goals, okay, we have two different attitudes available. Many of us are falling under some negative attitude. इसीलिए ये सेशन मैंने बनाया है, ठीक है. There are two types of attitude available. One, attitude of abundance, and the other is attitude of scarcity. The first guy is very confident, very optimistic, very cheerful, is continually working, you can say, towards changing his methods, trying to learn new things, while the person who has an attitude of scarcity, he always thinks, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास फलाना नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास टेस्ट सीरीज की कमी है, मेरे पास स्टडी मटेरियल की कमी है, मेरे पास एक अच्छे मेंटर की कमी है, मेरे पास एक अच्छा ऑनलाइन कोर्स नहीं है, बहुत सारी चीजें ये सोचता रहता है, ठीक है. While the guy who has the attitude of abundance, ठीक है, he becomes, you can say, very positive minded, ठीक है. When he can say he has this attitude of abundance, he becomes benevolent towards the world. He sees the world is a good place filled with good people. So that means whatever is available to me, it is really possible for me to achieve the goal which I have set for myself. Yes or no? So because the world is a good place and it is filled with good people, at the same time, this is the best possible time for me to achieve my goal. इससे अच्छा मौका कभी भी नहीं था. Yes or no? ठीक है. When this guy having attitude of abundance, it doesn't mean that this person is not aware about the problems. ठीक है. When he is going forward, he is aware that there are a lot of problems
there are a lot of challenges. Remember, those problems, those difficulties of the world, they have already been there. पहले से थे. ऐसा नहीं है कि when I started preparing I got this problem. Yes or no? सबको प्रॉब्लम आने वाली है. Yes or no? So when I'm going to start doing my reading comprehension, ठीक है, इनिशियली मैं comprehension पे ध्यान दूंगा, then I increase my speed. मेरा comprehension गिरना चालू होगा, I have to cover it up. Yes or no? When I start working on my current affair, I may not be able to remember a lot of things. ठीक है, I will get confused. I will feel, you can say, one big problem कि मेरे पास अच्छा कंटेंट नहीं है. ये बड़ा प्रॉब्लम होना चालू होगा. यस और नो? सो दोस्तों, ये जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला बंदा है, वो ये सोचेगा कि मेरे पास अच्छा कंटेंट नहीं है. एबंडेंस वाला ये सोचेगा आई हैव इनफ कंटेंट, जस्ट आई हैव टू एक्सेप्ट दैट द प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी देयर एंड आई हैव टू ओवरकम दैट. यस और नो? सो people with an attitude of abundance will become very positive and they will become constructive. If there is a problem in the approach, if there is a problem in terms of learning, he will find out those problems and start working on it. ठीक है, he will be more focused on solutions than the problems. ठीक है, and then you will be concerned about what can be done to improve the matters rather than blaming others. Yes or no? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों. ये हम बैठे हैं फरवरी में, एग्जाम is in the month of June, and this is a time many of us will be facing a problem of our attitude, and that is why we are discussing about this. My dear students, if you have an attitude of scarcity, ठीक है, you will be like opposite of this idea. You feel success is just mere luck. Only few people will achieve success. This is how your mind will start thinking. Mind will tell you कि सिर्फ वो 2000 बच्चे हैं जिनका एडमिशन होना है. आप ये सोचना चालू करेंगे कि अच्छा वो रिजर्वेशन वाले बच्चों का होना है, अपना तो होना नहीं है. ठीक है, यू विल स्टार्ट थिंकिंग द वर्ल्ड इज अनफेयर. ठीक है, यू विल स्टार्ट थिंकिंग द आइडिया कि यू नो दोस रिच आर गेटिंग रिचर, सो यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा वो टॉपर है वही अच्छा कर पाएंगे, वो जो ड्रॉपर है वही अच्छा कर पाएंगे. ठीक है, जो स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर पाए वही अच्छा कर पाएंगे. नथिंग लाइक दैट. यस और नो? नथिंग लाइक इट. अगर आप आखिरी के कुछ दिनों में सही एटीट्यूड के साथ, ठीक है, आप ये एटीट्यूड नहीं लेंगे, दैट इज एटीट्यूड ऑफ स्कैरसिटी. एटीट्यूड ऑफ स्कैरसिटी आपको बर्बाद करता है, आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो भी नहीं है, आपके पास फलाना भी नहीं है. इस तरीके की परेशानियां आपको क्रिएट करना चालू करता है. एंड देयर बाय द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द वे यू टेक योर एटीट्यूड. ठीक है, द वर्ल्ड अराउंड यू will conform to that. That means the way you think in your inner world, the outer world will conform to that idea. ठीक है, with this attitude of abundance, you have a very high sense of control towards your life, towards your preparation. This is very important. Okay, so दोस्तों, अगर आप positive, constructive होंगे, you accept a high degree of responsibility for yourself. आप जो मेहनत करते हैं उस मेहनत के पीछे भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि लुक, देयर इज अ लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. यस और नो? देयर इज अ लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. जो भी इफेक्ट आप चाहते हैं उसके पीछे कॉजेस होते हैं. ठीक है, अपने आप हवा में से आपका स्कोर नहीं आने वाला है. आपका स्कोर इज एन इफेक्ट. The effect is dependent on the kind of inputs you are going to put in, the kind of causes, the kind of efforts you are going to put in. Yes or no? And thereby to get right result, ठीक है, you take responsibility, you take charge of your life and you say, look, these are the causes which are going to impact my future. Yes or no? So you do not blame others, you don't find excuses. ठीक है, you don't find excuses, and if you are not happy with the situation, you get busy and do something to change it. ठीक है, अगर आपको लगता है मेरे लीगल में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, करंट अफेयर में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, you become busy, you start putting efforts. ठीक है, and even I'm not saying कि आप हमेशा अपने आप को बदल पाएंगे. कभी कभार आपने भरपूर एफर्ट लगाया, if you can't change it, you accept it and you focus on some other areas where you can change it, but you don't blame others. ठीक है, you don't criticize. ठीक है, you don't start blaming yourself.
So my dear students, if you wish to have a great goal like reaching into the top NLUs, okay, you need attitude of abundance. Yes or no? You don't go to the attitude of scarcity. Be positive, start working, have a great preparation for the next few days. Yes? Great. All the best.